एक सेकंड पर चेक कर ले रहा हूँ मैं, ऑडियो वगैरह सब सही है नहीं है। सब तो बराबर दिख रहा है। अरे क्या रे, कॉल करे तो नहीं उठा रहा, स्ट्रीम है तो स्टार्ट होके नहीं आ गया। आजा आजा डिस्कॉर्ड पे आजा। माफ कर, हेडफोन लगा ले रहा हूँ ना तो कल के जैसा हो जाएगा। एक सेकंड रुक जा, जरा हेडफोन वगैरह सेट कर ले रहा हूँ। रीसाउंड हो रहा वॉइस, रीसाउंड कहीं बहुत आ रही भाई। एक सेकंड चेक कर रहा हूँ। अभी स्ट्रीम स्टार्ट करा, जरा लिंक्स डाल दे रहा हूँ मैं, तो कोई भी लिंक बोल के नहीं पूछना। है अपना राइट। रीसाउंड कहीं को हो रहा मतलब डिस्कॉर्ड में आया क्या? तो एक सेकंड डिस्कॉर्ड में वही ज्वाइन हो के नहीं था। एक सेकंड। ओके अरे माइक के चीज इसका साउंड का वो नहीं आ रहा रे। राइट मिल गया। तो जाना है डिस्कॉर्ड पे। तो सुनाई कहीं को देरी रही है। हाँ मैं जिसमें से सुनाई दे रही। अरे क्या कांडू पना खा रही है। यूट्यूब बंद करे तो भी आवाज आ रही। और ब्रो ऐसा कैसा? यूट्यूब बंद करा मैं तो भी आवाज आ रही मेरे को। क्या चूतियापा है यार वो कि मैं हेडफोन जो कनेक्ट करा, पीसी को कनेक्ट करा, पीसी में से आवाज आ रही और मैं सोच रहा हूँ कि पूरी पाक की चूत मैं बुरा वो आवाज कहीं को आ रही बोल के देखे तक पीसी में लगे हुआ है। छी ब्रो। एक सेकंड चैट्स वगैरह देखता हूँ। थोड़ा सेवर सेवर आपके साइड से चला हो गए, मेरे साइड से चला था। चलो आ जाओ डिस्कॉर्ड पे जो भी आना चाह रहे। चलो मैं अपनी वॉइस को तो बंद कर दिया मेरी तरफ से। डिस्कॉर्ड पे आ जाओ, लॉबी में आ जाओ डिस्कॉर्ड के। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, एक सेकंड बोलिए। ये अच्छा अच्छा। तो कैसे है आप लोग? आ जाओ यार, वो स्ट्रीम का ऑडियो तुम लोगों को मिल गया था। क्या बोलते हैं अपने डिस्क्रिप्शन में देखो, डिस्कॉर्ड है, डिस्कॉर्ड में ज्वाइन हो जाओ और तुम लोगों को वॉइस ज्वाइन होने का ऑप्शन आता, बात कर लेते हैं, गेम खेल सकते हो।
और स्क्रीन पे ले जा रही है आवाज। तुम आ जाओ। आवाज तो बढ़ा दी। तो कोई तो ज्वाइन हुए। Who is that? Anas, okay. हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो अब बोल। कमेंट सेक्शन में हेवी ड्राइवर आके भाई। तो हेवी ड्राइवर कुछ बुला रहा हूँ सर, चैट में ज्वाइन हो जाऊँ बोल के। हाँ स्टार्ट नहीं। डाउनलोड करो क्या? हाँ भाई करो यार, कब तक ये गरीब की जिंदगी बोलो। हाँ आजकल बच्चे पूरा डिस्कॉर्ड में आके देश को पलट दे रहे हैं, ये गरीब को मालूम भी नहीं क्या है डिस्कॉर्ड। ऑलरेडी छोटे नहीं है कि दूसरी। सर अपन अपना मिशन करेंगे। वहाँ कड़ी के नहीं जाने का है। वो सारे एक ही देर का हो गई। कल का मिशन कौन सा रे? हाँ गया ना, जाके उसको एक बुक मिलती है वहाँ। बुक मिलती है उसको उधर, वो बुक के अंदर से वो आंसू कुछ रहता ना, वो मेमोरीज का वो पानी में डालता है। तो उसको एक क्या बोलते हैं विजन दिखता। वॉशरूम में आ गए। इससे याद आया स्कूल के जब क्या करते थे मालूम। स्कूल में ऐसी वॉशरूम रहते थे, तो अपन क्या करते थे ना, मग्गा वग्गा बाहर रखे हुए रहते थे ना। मग्गों में पानी भर के जो भी अंदर बैठ रहा था उसके ऊपर फेंक देते थे बेचारा। तो हल्के राइट हो जाते थे अपन तो। अब एनिमी कहाँ से ढूंढ के देखा हमारे। स्पेल कॉम्बिनेशन प्रैक्टिस एड्रेस तो बताना है ना। अरे ये भी याद रख लेना पड़ता शायद रे। रास्ते क्या होता। Incendio. Lumos. चमकड़ी वर्ड कई कोई भी नहीं माना इसका। मैं रे लैपटॉप राइट कर रहा हूँ। Reparo. Lumos. सोचा हूँ ऐसा कौन सा लैपटॉप है जो इतना सब वो कर ले रहा हूँ। Future नहीं champion coming through. क्या हुआ यार, अब तक डाउनलोड नहीं हुआ? कौन से गांव में है तुम? डाउनलोड करो कहते, रुको कर रहा हूँ। Hello, Lucan.
I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? ये आवाज नहीं तो जॉइन होने आता सर वॉइस चैनल देख इसमें जॉइन होने कितना टाइम लगा है अगर स्ट्रीम देख रही तो वहाँ जनरल मिल के दिखा है ना ऊपर अरे जॉइन हो गया ऐसा है ना आ गई That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations. दावा नहीं इसी रोटी से ताल ले ली लो ये आवाज पड़ा है क्या आवाज स्ट्रीम की वॉइस थोड़ा लैपटॉप से दूर रख के बात कर रहा हूँ भाई अब बराबर आती देखो अनस की चाय के बाद मेरी आवाज नहीं निकल रही स्ट्रीम पे नहीं आती है भाई चेक कर लो स्ट्रीम पे नहीं आती मेरी आती रही थी तुम लोग की नहीं आती हाँ मेरे को सुनाई देती बट Incendio. Leviosa. Nicely done. अगर हम नहीं अगर मैं रखा ना फिर तो ही बोलती मेरी इश्क की कहानी हो गई होती बोल सुना चिना पिल्लలు గుంజా గుంజా हेलो You'll get it. Leviosa. एक सेकंड क्या बोल रही है बड़ा माल फूके ने 90 मार के ने रात को टिकट माल फूक के आ रही ने याकुत पूरा का क्या बोलते हैं माल फूक के आ रही है थोड़ा जोर से आवाज करी गान पड़ जाती थी Keep trying. आपको अनाज कहाँ है अनाज बोल दो रुक जा अनस हेलो भाई ये बोल रहा हूँ थोड़ी देर डिस्कॉर्ड में से लीव कर दे ठीक है मैं तेरे को बुलाता हूँ जब ज्वाइन कर स्ट्रीम पे बोलता हूँ स्ट्रीम पे करा दूँ और बोले जब आता ठीक है That's it. सुना यार वो कहानी स्ट्रीम पे नहीं जाएगी नहीं सुना रहे भाई जल्दी जाए सुना हल्की सस्पेंस में रखा है Incendio. Leviosa. Accio. Incendio. Good one. किसकी आवाज कितनी आ रही स्ट्रीम की आवाज आ Impressive रही wand work. I'd hate to face you in a duel. Thanks, Lucan.
You've been a great help. Oh, stop. Don't make स्ट्रीम me की आवाज कम blush. कर ले, क्या बोलते? Seriously, well done. फोन Training में dummies will think twice before challenging you again. रुक जा। हाँ, Plus, you'll be एक even more सेकंड। formidable in अब तेरे crossed को स्ट्रीम ones. की आवाज चले आती। बोल। स्ट्रीम की आवाज बंद कर दिया मैं। स्ट्रीम की आवाज बंद कर दिया रे भाई मयूर। Levioso! Accio! Incendio! Incendio! Hello, Lucan. Is the final round across wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if you're training and... I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Yes, Sebastian. Then let's get started. We can make this a real victory. That's the spirit. Levioso. Lumos. Stupefy. Incendio. Levioso. Confringo. Don't try away. There goes my wager. Incendio. Levioso. Lumos. Protego. Stupefy. Act like a winner. Levioso. You think this is funny? Stupefy. That's all you've got? Come on. Stupefy. Mind the one. Protego. Stupefy. You're better than that! I'm still going to report. Lumos. Levioso. Incendio. Confringo. Pity more people can't watch the duels.
Hooray! You've won the tournament! That was nothing. I'm just kidding. Thank you. Accio. Revelio. Accio. Lumos. Shame it's over. You can't be beat, can you? The best you... Lost to a new student? I didn't see that coming. Lumos. Incendio. Levioso. Accio. Revelio. Accio. Revelio. Lumos. I've always said that travel broadens the mind.
Lumos. Accio. Incendio. Lumos. Levioso. Accio. Migrate on. Accio. Wish I could sneak in Revelio. just for an hour. I'd spend the entire day in Hogwarts. Is she growing Punja's onion again? Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here, you'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our pot. I wonder if hippogriffs Yes, like Professor. knotgrass. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of.
Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting Dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Well done! Once it can be... Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and... Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian! And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Here we are. Home of the Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. I'm sorry. What do I need to do? Garlic said she wanted you to have a go at tending the cabbages. Give them some time to chomp and whatnot. Nothing to it, really. Just toss some of those Chinese chomping cabbages out. You'll see fairly quickly why we call them that. Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back. Take your time. I'll see you back in class. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. Rona at the Three Broomsticks. Now remember, a wand is not a trowel. Revelio.
I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Hope those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damned hearing. Revelio. Revelio. This looks like the location from... Shouldn't there be auras or someone from the ministry guarding the school? Professor Black would never allow this. It would make him completely incompetent. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased.
Others, however, may be harder to obtain and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Majdoori potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Revelio. Your potion should not be that color, Miss McDowell. A well-prepared witch. Stations organized and free of clutter. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Majdoori potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Revelio. And now we add the mallow sweet, and... That's odd. What's happening? Professor Sharp must have learned a lot. Wait, it's not supposed to... Ah! Get it! Not again. Dragon time! What happened? Well done, Gareth. I was impressed that you were able to answer Professor Sharp's question about the Wiggenweld potion. Oh, thank you. That means a lot coming from a fellow Ravenclaw. And I've never seen anyone brew such a flawless Wiggenweld potion on their first try. Well done. I'm glad I was able to get it right the first time. You must simply have a knack for potion making. Some students seem so confounded by potion recipes, it's as if they're written in gobbledygook. A fascinating language, by the way. Neither here nor there, really, but I am a self-taught speaker. Merlin's beard, good conversation is the enemy of free time. I must return my book, Gateway to the Far Stars, before my next class. Speaking of stars, we'll be in astronomy together. You'll love it. Professor Shaw is firm, but quite clever. See you soon, no doubt.
I brewed an Adurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Revelio. I think each of us has had enough excitement for one day. The art of potion making. My robes are going to reek from Gareth's inspiration for the rest of term. How nice to see you, my young friend. I do get nervous. Revelio. Such interesting notions about how Apparently, Majdoori was having a different.
आजा रे बेटी, स्क्वाड पे आजा। अनस हेलो 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 भाई बोलियो। अब आ रही है आवाज? नहीं रे भाई, अब आ रही क्या आवाज? वो बोल कुछ भी नहीं। बिपाशा कॉल कर रही थी, कहते अनस का नंबर दियो वो ये मिलने की, वही बात चल रही थी। मरियम भी पूछ रही थी, कहते तो अब बिपाशा और मरियम दोनों खूब लड़ ले रहे कहते तेरे से। दोनों घाट जीप मार ले रहे थे कहते। तो मार सकते Accio. Revelio. एडमा नहीं रहा यार इसका। वो तो कुछ भी नहीं रहे भाई, बस कर लेते हैं या जो भी दिख रहा था कर देगा, अपनी ना पड़े। I should investigate. अच्छी इन्वेस्टिगेट कर रहा। मीट नैटली ऑर्गेनाइजिंग लोअर हॉक्सफील्ड। अरे मेरे को कबूतर या जो भी है वो उड़ने का वो होना है रे, इसके से स्ट्रीम कर रहा हूँ आज मेन। क्या बोला? It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. आवल सीक्रेट बोल को इन लोगों को पूरा कहानी ये पर छुपा के रखूं ये पुट्टी से भी। खैर रैंक पे अपन भरोसा नहीं करना है भाई। कैन से बोलो स्ट्रीम देख रहा तू? स्ट्रीम पे पूछ, इन्हें पूछ रही मेरे को कि क्या हुआ। अब तो भी बोल वो दो लोग तेरे पीछे कहीं को पड़े हैं बल्कि मेरे को डायलॉग का ऑप्शन दे रहा है इन्हें गेम। या तो पूरी सच्चाई बोल देने तो नको बोल बोल के। मैं सोच रहा हूँ ए पुट्टिया को कुछ भी बात नहीं बोलना, कहीं को बोलो पेट में काट की बात तो अपन। I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll, and Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. बिरयानी है, शवरमा है। अरे ये बोबा की क्या तू कभी? बोबा की कुछ भी नहीं रे भाई, दाने दाने रहती थी। क्या बोलते चाय कैसा रहता उसके अंदर। मैं बोबा मिल्कशेक पिया था कई को की वो दिमाग में, ठीक है। मेरा ऐसा आया था कि लैंड है बोले सर का, बकरी के मेंगिया है उनकी। साला 300 रुपए डाल के मंगाया था, दिमाग खराब हो रहा था पीते जब। कई को कि वो दिमाग का एक ब्रेन सेल ऐसा एक्टिव हो गया हो। अरे यार मेंगी कैसा दिख रहा ना, वो खाता 300 रुपए डाला बोल के पिया। इतना गांडू था, क्या ही बोल। इसमें 4 साल हो गया। ये रात में क्या क्या मिल रहा मालूम है? देर खिचड़ी खट्टा विथ खीमा।
ठीक है, बीफ खीमा, भिंडी फ्राई, चॉकलेट ब्राउनी, मसाला एक, खिचड़ी खट्टा, ठीक है, पराठे, शामी पराठे विथ चटनी, टमाटे की चटनी दी गई है लाल, प्लेन मैगी प्लस सिंगल शामी, बीफ, दाल फ्राई, जीरा आलू, तला हुआ गोश्त खत्म हो गया, ऑमलेट है भाई, 2 ऑमलेट देते, चीज ऑमलेट का देखो, मैगी के 10 पीस के, बर्गर तो बर्गर है 6, देखेंगे मछलीपट्टनम में क्या मिलता, बीफ बिरयानी है, मटन तला हुआ, बिरयानी, नहारी पाया, नहारी शेरवा, तंदूरी चिकन, चिकन 65, मटन मसाला, बीफ, तंदूरी रोटी, हाँ रे कुछ चिकन का हुआ अच्छा खाना हो गया था। And now I purposely ran on from this so many times. Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own, and the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. I'm going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, तू मारा तो शटर से तेरे को पीछे से बुला लेते तेरे को बुला लेके दे देते भाई तू बोल रहा ना अरे घर का मोहम्मदिया शवरमा है वो ठीक है मंदी के पॉइंट्स है वो हर चीज खुले रहते हैं But mummy, Archie, I don't have time to argue. I've told you repeatedly not to stray far from home, especially when I'm inside with your. I never thought Ramrocks. क्या मिला यार Revelio. They must have come this way. Think. I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's अरे nip back थोड़ी your डिले रखा time. भाई छे Oi! बोलता है रिसीव स्ट्रीम ऐसा करो डिले Mr. Rookwood would like a word with you. अरे ये सांप क्यों ना रहते ना स्लीदरिंग वाले हैं शायद Enough out of you. Leave her alone. कर रहे हैं जोड़े स्टूपिफाइड It's him. लाभ रहा है दोनों Incendio. अरे गाना बना फाइन जोड़े Oh. I'll watch the light go out of your eyes. Oh, पूरी गैंग आ गई ना The collection section of your field guide has been updated with new enemy types. You may learn valuable insights on enemy. Do you really think you can best protect us? I'm not going anywhere with you. You take this student off Accio. Levioso. Incendio. Lumos. Potato. You can't hold out forever. You're going to regret that. अरे होना है नहीं क्या बता अश्विंदर स्कोप कहाँ दिखा तेरे को अश्विंदर ओ अरे नहीं रे डेवलपर आया अपने इंडियन से तो बहुत सारे नाम इंडियन के दिखते मालूम तेरे को
What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner since I moved to Hogwarts. Stranger, what Revelio. Lumos. Revelio. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. अरे नहीं रे इंडियन लोगांचे प्रिया आगते मांकी चूर. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Here's what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher? Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. Mere myth. You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. But Mallowsweet? Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. अरे कुछ तो अच्छे खाने का आटा बोलना रे. हेलो खामोश हो क्या? उससे अच्छा खाने का आइटम बोल रही. ऑर्डर तो कर लेता हूँ. हमारा हो गया लियोन्स का बर्गर नहीं था. Child and running up. Well. बर्गर इतना पेट ही नहीं भरता. अरे भाई बर्गर खाए तो साला उसको 250 रुपए 300 रुपए में डालते रहते ना. क्या
हमारे पैसा खामोश हो गया सब दुनिया चलेगा क्या हेलो हेलो पैसा खामोश हो गया पैसा खामोश हो गया सदमे में चले गया आप ही चलो प्रोटीन प्रोजेक्ट बर्गर बच्चे को बर्गर होना ही भाई सब करना है ठीक है शॉर्मा नहीं है क्या ही करें हाँ, क्या करना तू साइड पे हम्म वो स्ट्रीट फाइटर बोल के एक गेम है उसमें एक क्या बोलते रहे भाई पंडित बनूं या क्या बोलूं मॉन्क के जैसा एक्टिंग कर रहा वही पागल हो गया देख के अरे ऐसे ही हालत कर दी है इसकी बोल के और ये देर को उसका नया लुक जर्रा तो भी पसंद आया विद्युत जामवाल का हो उसका ही बोल रहा रे भाई अरे हाओ रे कैरेक्टर है मेरे को भी मालूम तेरे को पसंद आया क्या वो नया लुक पूछ रहा हूँ हम्म हम्म ये गेमिंग के न्यूज चैनल में इसका आया था बोले ऐसा फॉरेनर ना बोल रहे थे इंडिया के से बुट्टे को उठाए लुक्स को इसको नहीं उठाए बट वो रहता ना क्या बोलते एथलेटिज्म वो ये बंदरी पना करे ऐसा टाइगर श्रॉफ और इसके बीच में था तो इसको ले लिए टाइगर श्रॉफ उछलते उछलते पाद मार देता बोल के वही से रे उछलते उछलते पाद मार देता बोल के उसको नहीं लिए गए थे कितना कितना बुरा औरा का लौरा हो गया होगा रे इसका उन्हें घर जाके मीम्स देख देख के रोया होगा रे वही बेचारा क्या मिलता उन लोगों को हम्म बेचारे के कमेंटा देगा तो ऐसा रोना आता रे वही बेचारा रोज सुबह में उठ के उसकी प्रोफाइल में जीता
क्या गांड मार ले रहे भाई बेचारे की। क्या है समय रहने का शो अब तक नहीं आया। खाली डॉलर डाला ऐसा है यानी। सब मिलके बेचारे गांड मार लिए नहीं तुम लोग। ये कैसे चल This रहा। trunk. Yes, take ये plenty, गांड even पड़ if you गई मेरी। already have some. और रात में जिन्ना के बढ़िया क्या मेरा कैरेक्टर चल रहा। I have the mallow sweet. Lovely. Now, इधर रात notice भी the होगी हम lines अच्छी on किरी these किरी अपन और भी नहीं कर रहे। as well as a stone swell on the इन्हें ground. स्ट्रीम में नहीं इन्हें समझ रहा हूँ स्ट्रीम देख लेते हैं मलिक भाई कहाँ की जा रहे हैं। Place the mallow sweet on नोरा दा this लोरा। swell, and we'll see what happens. कहाँ है रे बुड्ढी कहाँ है रे। ये तीसरी बुड्ढी नहीं बुड्ढी स्कूल यूनिफॉर्म में तो नहीं रहेगा। Revelio. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. देख रहा स्ट्रीम। बैठ के अच्छा देख ले रहा हूँ नेक्स्ट क्या होता था दूसरे स्ट्रीमर का। हैं? आस्काबान भी है इसमें। Perhaps a spell might help us here. चल चल चल। अच्छा है होना बंदे बंदो। सर चार्जेस वगैरह गिर रहे क्या। These pillars are pyres, and pyres are meant to be lit. एक सेकंड। Conjuring fire might work. These are pyres after all. Perhaps a spell might help us here.
These pillars are pyres, and pyres are meant to be lit. You got the mallow sweet to work. Now what to do about these pyres? Conjuring fire might work. These are pyres, after all. Perhaps a spell might help us here. Protego! Lumos. Accio. Revelio. Accio. Lumos. These Accio. are pyres, and pyres are meant to be lit. Oh, एक second. Incendio. Fire's beard! The flames make the pyre sink. Oh. गेटवे बन रहा How beautiful! जादूगर नहीं आई What a day! I can hardly believe it. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Accio.
Levioso, Accio. Levioso, Accio. Levioso, Accio. मैं तो दबा रहा हूँ भी नहीं। Levioso, Accio. Levioso, Accio. Incendio. Lumos. Levioso. Accio. Greetings. I understand you're quite the enterprising young Ravenclaw. Professor Fig tells me you found a long-lost book for him. I'd like to talk to you about it. इधर कैसा जा रही है? इसमें फास्ट ट्रैवल कैसे कर रहे थे ना अपन? हॉगवर्ट्स मैप। फास्ट ट्रैवल बोलते एक जगह से दूसरी तरफ जाना। ओलिवेंडर इन हॉग्समीड। मैप में जाके हॉग्समीड ये छे। देख यहाँ तक है। देख ट्रैवल बोल के मारता हूँ मैं यहाँ नीचे हूँ, समझ में आ रहा ना? देख मैं यहाँ हूँ, दिख रहा? ये जगह पे हूँ मैं। मेरे को अब 1000 मीटर तक तो जाना है, तो इंस्टेड ऑफ पूरा जाके मैनुअली ट्रैवल करना पूरा चलना, ऐसा ट्रैवल बोलता हूँ फास्ट ट्रैवल हो जाता। तो 1000 मीटर जाने की जरूरत नहीं, अब 200-300 मीटर जो भी है वो कवर अप कर लेना। लोडिंग स्क्रीन आ रही थी। आ गया देख, ऐसे सिर्फ 400 मीटर है। अरे उड़ने का वगैरह ऐसा कुछ स्पेल ले रहा था रे। Accio. Lumos. तो एक चीज गौर कर रहा, इसकी गेम की क्लैरिटी जबरदस्त है, तू गौर कर। These rocks have seen better days. बिना लाइट के कैसा अंधेरा है ये देख। Protego. Lumos. Accio. Levioso. कैसा उठाना रहे इसको? Revelio. यहाँ कुछ तो दिख रहा, 2 आइटम है। चल रहे वो तरीके से। ये शेर का सिंबल कहीं को आ रहा, तो जानवर है क्या यहाँ? यहीं से राइट पे बता रहा। Incendio. हो रहा तो नहीं इन लोगों को। Accio. 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 पफिन स्कीन का थे, उससे कुछ हो रहा तो नहीं। अरे अपन मारे थे नहीं, एशविंडरबल के लोग अनलॉक के एक्स का थे। यार टेढ़ा हुआ ये। Accio. स्पीयर क्रोच है। Revelio. ये दिख रहा क्या आसपास? नहीं है। Lumos. एक सेकेंड, एक सेकेंड, पानी दे, पानी दे। समझ में आती तेरे को?
क्या बोला? पानी में रोशनी कैसा रिफ्लेक्ट हो रही है देख। देखेंगे पूरा हाई पे है या ऑटोमेटिक नीचे कर लिया इन्हें। FPS पे तो बराबर ही छे। ग्राफिक्स अल्ट्रा सब बराबर ही छे। तो मैक्स पे चल रहा है भाई और स्ट्रीम भी अलग से। स्ट्रीम की क्वालिटी बढ़ाना है रे भाई, देख रहा हूँ मैं। क्या होता मालूम मोस्टली नई से जगह गांड में उंगली कर दे तो हाइसो स्ट्रीम भी चले जाती, समझ रहा हूँ। हाँ वही बढ़ा हुआ हूँ स्टंटा आपको बोले सब। इसमें से जाना है ना। अरे वही चले छड़ी बनाते वाला। Good of you to come. My friend, Professor Fig, speaks highly of you and your resourcefulness. He was vague as to details, but mentioned your having tracked down a difficult-to-find book. I wondered if you'd be willing to do a little detective work on my behalf. I suppose I could, but why should I spend my time on a glorified errand? It is much more than a glorified errand, to be sure. I dare say you'll find my proposal intriguing. Please, hear me out. You see, about a century ago, an heirloom applewood wand with a fairy wing core went missing from this very shop. My great-aunt suspected a student named Richard Jackdaw. He'd been serving as an assistant here and suddenly vanished. Richard Jackdaw? Like the bird. In fact, he was known to frequent the Hogwarts Owlery. We searched there, of course, but found no wand. We did find a series of statues similar to Jackdaw's. I'm certain they're a clue, but I cannot figure out where they lead. Jackdaw was last heard tittering about some pages with a map he'd stolen from Peeves. As you can imagine, the poltergeist was less than helpful. Surely you could continue searching the owlery. Oh, one would think. However, the headmaster... Also, I have perhaps been looking for too long. Is there anything special about the wand? Oh, yes. It's terribly special. But not in the way you might think. It won't grant special powers to the caster, no. Nothing like that. But it will ease the hearts and minds of the Ollivanders to know of its return. And that power is immeasurable. Why would the thief have taken the wand? I must admit I have no idea. From what I can gather, he fancied himself an adventurer of sorts. Always looking for trouble. In fact, after he went missing, rumor had it his ghost was seen in Hogsmeade. Never heard much about him after that, but it seems as if his adventurous spirit may have got the better of him. Perhaps he thought that the wand had some special power simply because of its esteemed lineage. Astonishing how misunderstood the art of wand making is. इसके like 4 parts रहते जैसा अलग-अलग. I'll have a look for you. You like certainly give me groups plenty रहता ना to go जब on. भी You brought hope to this whole 4 wand maker's choose करो बोल के बोला था. Professor Fig हर was जाना right. You are ये a स्टोरी का एक remarkable हिस्सा student. देखना. So it's like अगर मैं नया गेम स्टार्ट करा, दूसरे ग्रुप में ज्वाइन हुआ तो फिर से एक नया देखने को मिलता स्टोरी. वो तो ये वाला स्पेशल मिशन. मुंडी कटी भी रहती देखो आदमी की. ये डूडे आने से अच्छा. जाना किधर है? Hogwarts मैम.
गिर भी नहीं बता रहा ना वो। चलो हॉक्स मीड में देखेंगे इसको। ओके बराबर इधर आना रे, इधर इधर कहाँ जाने का है। साउथ विंग में इधर आएंगे, एटलीस्ट यहाँ से तो नजदीक है वो जो भी है। यही कंप्लीट कर दो पहले ये वाली स्टोरी। क्या बात है, मैं डिस्कॉर्ड से डिस्कनेक्ट कर दिया। हाँ हाँ देखा था वहीं। उधर जाना किधर है 160 मीटर्स, बट हवा में है ना रे वो। फक मार की चू। अरे लौड़ू मर गया, मर गया लौड़ू। गाड़वस्ती को कूदा इन्हें फिर। और स्कूल में कूदो बोल तो कूदने नहीं आया, स्कूल रुक जाता है, नहीं कूदता नहीं। ओपन क्वेस्ट लॉग, ओके ओलिवेंडर का इधर। हाँ तो ट्रैक क्वेस्ट तो जाना है मैप में। मैं इधर हूँ, यहाँ है ओलिवेंडर का ये। अरे बराबर नजदीक ही है ना। वहाँ जा नहीं सकते ऐसा। रुक जा, इसको कुछ पूछेंगे रास्ता। अरे एटलीस्ट झाड़ू तो भी देना रे भाई उड़ने के वास्ते, ये क्या तरीका है। कुछ तो भी है ही क्या ऐसा उड़ने का ऐसा। स्पेशल एबिलिटी तो नहीं दिख रही, ये क्या है। ताला तोड़ने का ये करेगी। जाके कुछ तो भी इन्वेस्टिगेट करना है। और अपनी वो छुपने वाली एबिलिटी को वो कर लेंगे। राइट, किससे चेंज करना है, ये काज है ये करता था ना ये वाला कंट्रोल। ओके ये उठाने वाला। हाँ अपन इसको चलो चल देखा गया तो वो लाइट वाले से भी चेंज कर सकते थे अपन। Revelio. Revelio. अंदर कुछ तो बॉक्स है। The statues Mr. Ollivander mentioned must be upstairs amongst the owls. और ड्रेसेस भी बहुत सारे मिले रहे, ड्रेसेस भी ट्राई कर सकते हैं अपन। Don't mind me, owls. I'm just here to help a friend. Now, where are those statues? Revelio. I recognize those handles. The summoning charm should do the trick. No statues here. Birds aren't afraid of heights. Perhaps I should look a bit higher. Accio. Revelio. Accio.
Nothing. पेपर होना है रे वो. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. आग जलाने का है जैसा. Incendio. Revelio. यहाँ कुछ तो है. इसके अंदर है. रेंडर हो रही जी स्ट्रीम. और कौन देख रहे स्ट्रीम? मैं तो देख रहा हूँ रे भाई बराबर ही से. ओहो ऐसा है ये मसला. Here's a welcome surprise. I'd best keep looking. Revelio. Accio. Empty perches. No statues here. Accio. Nothing. प्लेस पर कहीं गुजर आ रही. रिटर्न परचेस समझ में नहीं आ रहा मेरे को. ठीक समझ में आया. 3 बता रहा. वैसा कौन देख रही है? I'll take that, thank you. Revelio. Accio. Accio. Lumos. Return the bird sculpture. Revelio. Olivery 1 pound sculptures of bird sister. Okay. Accio. चल यहाँ रखना नहीं था रे भाई. Revelio. यहाँ ऊपर जाके एक स्टैचू लेना है. ऊपर जाके एक स्टैचू लेना है. Accio. I'd best keep looking. This'll do nicely. Revelio. Accio. No statues here. Nothing. Here's पूरा a welcome स्टैचू नीचे surprise. डाल देता हूँ. I'd जाके best पोस्ट keep में looking. देख ले लेता हूँ. I'll take that, thank you. Accio. No statues here. यार नीचे बता रहा थी. पहले वो 10 मीटर का नहीं दे रहा था, अब दे रहा. तो गिर गए फाइनली स्टैचू जो भी अपन ढूंढ रहे थे. और यहाँ ऊपर भी कुछ भी नहीं बता रहा. बोल तो वही नीचे गिर गए वो ऐसा. ये है वो स्टैचू.
Revelio. Accio. What's happening? इधर का इधर ही लगा दिया मैं तो। रिटर्न करने का था असल ये। इसके बारे में बोल रहा था मैं, कटा हुआ सर वाला मिलता वाला नहीं। इन्हें लेके आता अपने को, एक छड़ी मिलती है अपने को। Could it be? Has someone solved my puzzle after all these years? Well done indeed. Good news. If you've got something to hide, you found the perfect spot. Richard Jackdaw, at your service. The Richard Jackdaw. So Mr. Ollivander was right. He wants his family wand back. Goodness, I'd forgotten about that wand. I assure you I don't have it on me. I'm almost certain I dropped it the moment I was beheaded in that cave. Oh, it was sheer folly to follow that map. What map? Ridiculous, really. Found it on some yellowed old pages Peeves had pilfered. Thought I could impress a girl. में तो स्ट्रीम बंद करना पड़ता। Odd. ये तो स्किप कर दे रहा हूँ। If that's the only way. और 2 लेवल रहे तो अपने को लॉक्स खोलने का मिल जाता। ये देखो 700 मीटर पे है ना, ठीक है, लॉक होके है वो। कुछ तो सिखो बर रहा देख, डिसआर्मिंग चार्म बोल के। हॉगवर्ट्स मैप के अंदर जाना है। तब पूरा ट्रैवल करने के बदल देख कैसा इजीली चले आते अपन सीधा स्कूल के अंदर। चलो वैसे भी खाना भी आ रहा, कमर भी आखिरी दर्द दे रही, पहले रेट हो जाता हूँ यहाँ से। ये नहीं होता। ये भी नहीं होता। अरे कहीं तो डिफेंस का रहता रे भाई, वो डिफेंस के पास जाने का है। खैर नहीं भी मिला तो लाइट ले लेंगे, तब कल की स्ट्रीम पे कंटिन्यू करेंगे बाकी का। I asked to meet Takar to tutor me in Transfiguration, but he refused. I'm Accio! Incendio! Sometimes I wish someone would... Accio! Incendio! How many times must I tell you? We are a Chudley Cannon family. We do not support Puddlemere United. If I find one more of them... खैर अपन अपने नए ड्रेस ट्राई कर लेंगे। ग्लव्स वगैरह नहीं मिले, हैंडल एक नया मिली, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, सो अपना पुराना वाला ही दो। मास्क मिला, चूतिया दिख रहा, बट डिफेंस बढ़ रहा तो पहन लेना पड़ता खामोश। कुछ फर्क नहीं। क्लोक्स मिले,
यार बाकी का तो लेट ही दिख रहा मसला। तो ये अच्छा है। और 6 कॉइना है, सॉरी 1200 कॉइना है। चलो आज की स्ट्रीम बस इतनी है भाई, कल देखेंगे बाकी का स्ट्रीम का। बस वो पीजीएन या जो भी है वो उड़ने वाला, क्या बोलते हैं, चील समझो, जो भी समझो, वो अनलॉक करने तक देख रहा हूँ। एक बार वो मिल गया तो खाली घूम ले तो फिर ना है वही गेम में, उसके से मिशन कंप्लीट कर रहा हूँ मैं। चलो भाई, राइट। चलो स्ट्रीम भी ऑफ हो गई।